I could Yeah. see my grandmom in Amma because I thought it was so beautiful that because my nanny was illiterate and but she was the most intelligent, she was the wisest in the family. These women were just amazing, and I thought it was great that we have such a big gravity that these are the people who actually bring you together. तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, it should be convincing to my mind that my mom is proud कि मुझे छोड़ के गया है. At least he's not. He had enough money, but why did he have to leave me? I want to answer her in every project I do. Hey, Mama, I do this for you. I do this for India. I think ये बहुत ही कहानी है हर NRI की कि जो घर छोड़ के जाते हैं for better life in a way. And they're always guilty. They're always guilty of leaving their aging parents, very old grandparents behind. Everything familiar to them they leave behind. और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ. अमृतसर कितना खास है आज भी आपके लिए? क्या ऐसा मेमोरेबल चीज है जो आपको लगता है आपके हमेशा वो दिल के क्लोज रहेगा? घर ही याद आता है सबसे ज्यादा. पुराना घर, नया वाला नहीं, पुराना घर. एंड खाना, हरिमंदिर साहिब एंड सड़कें. हाय विकास, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी. वेरी वेल. वार्म वेलकम. So good to see you. Virtually sahi, but it's so good to see you. You have no idea. I'm feeling very happy right now. थैंक यू. लाइकवाइज. So, विकास, द लास्ट कलर जैसी इंस्पायरिंग स्टोरी के बाद अब आप एक और स्टोरी लेकर आए हो जिसका नाम है बेयरफुट एम्प्रेस. 96 ईयर ओल्ड वुमन पढ़ने का सोचती है. 96 इयर्स, लाइक इट्स अ लॉट. मतलब कोई सोच नहीं सकता. तो ये आइडिया ही अपने आप में इतना इंस्पायरिंग है, इतना अलग है. तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस आइडिया की शुरुआत कैसे हुई और कौन है ये लेडी? आइडिया की शुरुआत तो सोशल मीडिया पे शुरू हुई थी व्हेन शी वेंट टू स्कूल या. एंड आई थॉट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी. और मुझे लगा कि इतने ज्यादा लोग लिख क्यों नहीं रहे इनके बारे में. तो दैट इज व्हेन आई फेल्ट मुझे एक बार मिलना चाहिए बिकॉज मुझे लगा बार बार लोग मुझे कह रहे हैं कार्तिक निर्मा के बारे में. सो आई फील दैट द यूनिवर्स ट्राइज टू टेल यू द स्टोरी. या. यूनिवर्स आपको कहानी बता रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप इस कहानी को आगे बताएं. So I felt that for me it was like a message from the universe. Ki, come on now, rise, stand up. This is the most important story we are telling, and honor it. So with full devotion and dedication, I went to Kerala, and that is how the silsila started. And I fell in love with Amma and her honesty and her wisdom and her determination. या. तो जब शूट कर रहे थे तो शूट का एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा? हाउ वाज शी? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एज इतनी ज्यादा है एंड देन किसी तरह की कोई इश्यूज आए आपको या फिर यू वर इंस्पायर्ड जिस तरह से वो इतने इंटरेस्ट से शूट कर रही थी आपके साथ? There were heartbreaking moments. It या. can't be all because this is an unusual story. या. हमारे 30 साल के एक्टर्स होते हैं, उनको पीठ में दर्द है, कभी किसको कान पे दर्द है, and having a woman who's 100 years old. या. And some days were very not so. She was not so strong. Some या. days, and we were all flexible to this. We were like, okay, Amma, don't worry about it. We'll come back. So it happened to us. I went to see her 2 weeks ago in Chapar, and she couldn't get up. She was on the bed, and but she wanted to stand, like get up and hug me. या. So we used all the help that she can hug me, and unke favorite jasmine ke flowers and all the things I love Yeah. on her. I took everything, so I like adorned her. I think it's an amazing story of not giving up. And Yeah. more than ever today, we need this story post-pandemic, understanding के हम सब डरे हुए हैं of uncertainties of life. Yeah. हम सब डरे हुए हैं कि how vulnerable we are right now. And I Right. feel उसकी वजह से ये story और significant है. True. So, मैंने कहीं पढ़ा, अभी आप बताना कि आपकी अपनी जो जर्नी रही है कुकिंग की इतने सालों की, तो वो भी कहीं न कहीं एक लेडी आपकी बीजी से इंस्पायर्ड है. इज़ दैट ट्रू? Yeah, absolutely. If BG was not there, I would not be here. Yeah. But मुझे ये भी लगता है कि फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. कॉलेजेस वगैरह बहुत बाद में आते हैं. जी. उसके बाद ट्रेनिंग है, उसके बाद ग्राइंडिंग है, उसके बाद प्रॉपर स्टेबल जॉब्स है,
when you can express yourself. उसके बाद investors हैं, उसके बाद restaurants हैं, उसके बाद proving yourself, and then is the Michelin star space, you know. So it's a very long journey. पर अगर foundation ना मेरी होती for a woman who supported me, cared for me, and she was bigger believer of my dreams than myself. Yeah. I think maybe because of that, हर मैं जो subject उठाता हूँ उसमें female centric है. I don't know. Maybe because I was about to come on that only because I also noticed this pattern. मुझे लगता है कि subconscious mind है मेरा कि मेरे को वही gravitate करता है, because you know I could see my grandmom in Amma. I could see my grandmom in Amma because I thought it was so beautiful that, because you know my nani was illiterate, and but she was the most intelligent, she was the wisest in the family. These women were just amazing, and I thought it was great that we have such a big gravity that these are the people who actually bring you together. True. And I think Family, you know जैसे इनकी story है, उनके बिना जितने भी योद्धा बन जाए, मैं I did my PhD from Harvard and Princeton, but families को नहीं जोड़ सका. The way they united everyone, the way they celebrated everyone, you know? How they comforted, they were like therapists. That's true. अच्छा एक बात बताओ, आप राइटर हो, फिल्म मेकर हो, शेफ, आप इतने सालों से रहे हो, इतने शोज जज किए हैं, और मतलब मुझे और ऊपर से ह्यूमैनिटेरियन हो, आप काफी कुछ करते हो सोसाइटी के लिए, which is again commendable, and I've been following your journey since long now, very long. इतना कुछ कैसे कर लेते हो? Be honest. मतलब how do you manage things? So I left home when I was 29. So you know I would say pretty successful as per the standards of Amritsar. Like possibly the richest caterer in Amritsar, like every big weddings, everything I was doing. But वो सब कुछ छोड़ के जाना, right? All the businesses, 300 employees, all those things. At the same time, you started a whole new life from scratch. तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, it should be convincing to my mind that my mom is proud कि मुझे छोड़ के गया है. At least he had enough money, but why did he have to leave me? You know, I don't want to answer her in every project I do. Hey, Mama, I do this for you. I do this for India. But at the same time, even if I left home, I never left you physically, of course. But I think ये बहुत ही कहानी है हर NRI की कि जो घर छोड़ के जाते हैं for better life in a way. And they're always guilty. They're always guilty of leaving their aging parents, very old grandparents behind. Everything familiar to them, they leave behind. और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ कि भी उठ के, तो वहीं से मेरे को हिम्मत आती है इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का. एंड पीपल थिंक बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट, ऐसे नहीं, मैं एक टाइम पे एक ही करता हूँ. But we have a team when you start, then after some time you delegate. So मैं भी पंजाबी हूँ विकास, सोनाक्षी कालरा मेरा नाम है, आप भी पंजाबी हो विकास खन्ना. तो मेरा भी मेरी फैमिली के साथ बहुत अमृतसर जाना लगा रहता है. एंड आप तो पले बड़े ही अमृतसर में हो और आज चाहे आप बाहर सेटल्ड हो, पर अमृतसर कितना खास है आज भी आपके लिए? क्या ऐसा मेमोरेबल चीज है जो आपको लगता है आपके हमेशा वो दिल के क्लोज रहेगा? अमृतसर देख लीजिए, ग्रैंड मदर टाउन है. बहुत बार अमृतसर टूटा, बहुत बार दोबारा से उठा. एक ऐसा शहर है जिसने हिंदुस्तानी खाने की पहचान पूरी दुनिया तक पहुंचाई. दिस वाज द फर्स्ट क्यूजीन व्हिच वेंट अब्रॉड. और हर जगह पंजाबी मिल जाते हैं. तो बहुत पंजाब का एक बहुत प्रभाव रहा है दुनिया के कल्चर पे, म्यूजिक पे, खाने पे. तो उसी का एक छोटा सा मैं हिस्सा हूँ. और जो याद आता है मुझे सबसे ज़्यादा घर ही याद आता है, सबसे ज़्यादा पुराना घर, नया वाला नहीं, पुराना घर. एंड खाना, हरिमंदिर साहिब, एंड सड़कें, ग्रैंड पेरेंट्स. आपको कोई बताता नहीं है व्हेन यू आर ग्रोइंग अप इन स्कूल, आपको कोई बताता नहीं है कि जब आपस में लड़ाई करते हो आप कहते हो दोबारा से तो देखूंगा नहीं दोबारा से, राइट? लड़ाई होती है, मैं तो मुंह नहीं देख रहा दोबारा तो. बट व्हेन यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज कि वो बातें सच होती हैं. यू नो समटाइम्स दैट थिंग्स चेंज, पीपल पास अवे. एंड वो बहुत एक पॉइंट है, मतलब कंफर्ट के लिए अमृतसर इज ऑलवेज ऑन माय माइंड. या दैट्स ट्रू. अभी भी आपका होता है पंजाब जाना? कितना फ्रीक्वेंटली जाते हो? और डू यू स्टिल मिस दैट वाइब जब आप वहां जाते हो कि वो एक पुराने टाइम में एक अलग वाइब थी? बिकॉज चीजें डेवलप हो जाती है, हर सिटी हर स्टेट में होती है.
एंड कहीं ना कहीं हमारी वो पुरानी यादें जो हम जाते हैं ना, तो हमें वो सब कुछ पुराना याद आ रहा होता है। शहर तो बदला है, पर अमृतसर इतना बदला नहीं है। आई हम्म। एग्री। अभी भी वो खाने की फेवरेट चीजें हैं हमारी, वहाँ पे कुछ जी। दुकानें, वो सब कुछ बदल रहा है एब्सोल्युटली। शहर हम्म। का दिल नहीं बदला, शहर का दिल उतना ही बड़ा है जितना था हमेशा से। ओके। ओके। सो अभी अभी अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें जो आप कर रहे हो, द डॉक्यूमेंट्री जो आप लेकर आए हो, बेयरफुट एम्प्रेस, इसमें जब आप अम्मा के साथ काम कर रहे थे, कुछ केरला की कुछ लैंग्वेज सीखी, तमिल में उन्होंने कुछ आपको बोलना सिखाया, मलयालम में कुछ बोलना सिखाया, ऐसा कुछ हुआ इस पूरे शूट के दौरान? नहीं? बहुत मुझे पूरी इंटेंस उम्मीद थी। शूट्स, ये बहुत इंटेंस शूट्स थे। जी। बिकॉज यू वर इन द बैकड्रॉप ऑल द टाइम। ओके। इंटरव्यूज हमारी बहुत कम थी, वी वर इन द बैकड्रॉप, कैप्चरिंग द मोमेंट्स, कैप्चरिंग एवरीथिंग। या। और आई कैन अंडरस्टैंड कन्नड़ा एंड तुलु। हम्म। आई कांट अंडरस्टैंड मलयालम। ओके। एंड अगर और अम्मा बोलती भी इतना तेज तेज थी, समझ नहीं आता था हमको। Always had translators with us, and I think that was one of the gravity of the whole thing. If we didn't need language to communicate with Amma after some time, it was so pure and sacred and beautiful. कि वाओ। अम्मा, after some time मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी translators की, because of course when you're making a documentary you have to subtitle everything word by word. या। तो जरूरत पड़ी, but I could tell what she's saying. I could feel it. You could feel the connection that was there. You don't spend so much of money, time. Money is also irrelevant in this case. So Yeah. much of time and energy putting everything in the back burner and finishing a documentary of something so pure and so foreign to you. Yeah. I'm from India, and this whole language thing, it was still like a different space for all of us, right? How do we communicate with people? Yeah. भी हिम्मत चाहिए थी, and I agree. And I feel documentaries या movies आप नहीं बनाते, भगवान बनाते हैं और आपको वहाँ रख देते हैं कि आई एम गिविंग यू द स्टोरी, तू बना इस पे। क्योंकि हमें कभी ताकत नहीं हो सकती ऐसे जुड़ने की, लोगों से कहानियाँ जी। बताने की और इतना ट्रैवल सक्सेसफुली करने की, और फिर मूवी भी इतनी सक्सेसफुल हो जाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, Yeah. बहुत रेयर है। इसमें सृष्टि का बहुत बड़ा हाथ है। That's true. जब आपने इतने फिल्म फेस्टिवल्स में इस फिल्म को दिखाया, इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया, व्हाट वाज द रिस्पांस लाइक? कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो आपको अभी भी याद हो, जो आपको मिला हो इसके लिए? When you're on the festival, so what happens is that Japan, when the movie was screened, हम्म। it has a very big influence. It won the top awards at the festival, which were all Oscar qualifying या। festivals. And एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई थी वहाँ पे, वो ये था कि किसी ने चिट्ठी लिखी कि you know it's so unfortunate we never asked our grandparents what was their dreams. She's saying, I went back to Kyoto, या। and she's saying I asked my grandmother what she wanted to be, and she says she wanted to be a knitter, knit करने वाला. I wanted to have my business as a knitter. So she's saying just your movie inspired me to ask the question to my grandparents or great grandparents that what was your dream? क्या या। हम कुछ कर सकते हैं उसको पूरा करने के लिए? We are the people who have the influence now. We are on so over connected on social media. For somebody to send a request saying कि मेरी दादी की ये wish है, there will be people like us who will say, you know what, let's work on this. या। Let's give her that wish. Let's grant it. I think the whole thing is so amazingly emotional. या। Just to have a movie on this. And I'm like, but why did universe choose me? You have like 4 restaurants. And I'm not a chef who's cooking only on Instagram. या। It's like you have restaurants that people physically pay their physical judgment of you, accolades, and then you make या। documentary works, and then you travel so much doing your shows and everything. But ये बीच में कहानी इतनी important थी कि I had to stop everything and say नहीं, ये कहानी तो ऐसी कोई है ही नहीं और यूनिवर्स की कहानी मुझे दे रहा है, so I have हम्म। to honor it. या। आई एम श्योर यू हैव डन इट बिकॉज़ जिस तरह का कनेक्ट आपका बैठ जाता है इसको देखकर, सो दैट इज वेरी स्वीट एंड वेरी हार्ट वार्मिंग आल्सो फॉर ऑल ऑफ अस. हाय, वी हैव अ क्यूटी हियर. Hello, What is his name? Plum. Plum. Hi, Plum. He's been You doing look very interviews since beautiful. morning. नमस्ते करेगा उसको? नमस्ते करेगा कि नहीं? करे ऐसे नमस्ते. हेलो, नमस्ते सत कर। श्री अकाल नमस्ते करेंगे. जी, नमस्ते जी, गुड बॉय। नमस्ते, सत श्री अकाल also. इतनी अच्छी नमस्ते की है इसने। अच्छा, एक बात बताइए विकास,
इतनी बड़ी जर्नी आपकी रही है, एज आई सेड कि आपकी जर्नी बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग है, बहुत सारे एरियाज में। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि शेफ्स के लिए आप इंस्पायरिंग हो, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत चीजों के लिए हो। बट आपकी जब आप खुद की जर्नी को देखते हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है लाइफ में जिसने आपको चेंज कर दिया हो अच्छे के लिए? क्योंकि हर एक के साथ ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है जिसको लगता है कि यहाँ पर मेरी लाइफ का शायद वो टर्निंग पॉइंट आ गया था, या यहाँ पर मैं एज अ पर्सन ही बदल गया था। I think Feed India. या It totally changed me. It broke me to many levels, many या pieces, but it also changed me. मुझे भी विश्वास हुआ कि अम, ऊपर वाला उसका साथ देता है, सबसे बेवकूफ़ भी होता है। हम्म उसका दिल ठीक जगह पे होता है, वो कहता है भैया तेरे से नहीं होगा, मैं ही तेरा कर देता हूँ, पर तेरी सोच ठीक है। And this is what happened to us. You know, I feel that every day I saw miracles, miracles, things falling apart and not getting the deliveries to people. Food trucks चोरी हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? या तो ऊपर वाला कहता है कि मैं आई कैन सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड आई आल्सो सी हाउ ब्रोकन यू आर कि योर मदरलैंड इज इन सो मच पेन या एंड आई फील दैट दैट वाज समथिंग व्हिच टोटली इंस्पायर्ड मी एंड ब्रोक मी टू मिलियन पीसेस या जिस तरह का काम आपने आपने उस टाइम किया है, दैट इज amazing, amazing, really. Because I was आई डिडंट seeing डू all इट the इट हैपेंड updates टू at मी that time, I remember, and it was so good to see that कि आपने इतना contribution दिया, and I can now see the smile on your face because जिस तरह से आपने फीड इंडिया का नाम दिया, उसी में दिख गया कि वो कितना खास रहा है आपके लिए। और बस जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि विकास खन्ना की लाइफ की सुपर हीरोज कौन है? वॉइस इज टोटली You can't hear me? Vikas, can you hear me? Can you guys hear me? Tanakshi, we can hear you. I just spoke to Amitji also. Yeah, this is gonna be the last question. I said that. I think you couldn't hear it. Yeah, because the voice was a little distorted. I think we Yeah. were having थोड़ा सा data का issue. Yeah, ठीक है. We are wrapping it up now. Yeah. थैंक यू जी सॉरी No problem. तो विकास, बिफोर आई लेट यू गो, जस्ट एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। विकास खन्ना की लाइफ की सुपर हीरोज कौन है? वाओ बहुत सारे हैं मम्मा फर्स्ट आई एम very inspired by Barack Obama, which everybody knows, Yeah. Michelle. Um, I really look up to Satyajit Ray. Yeah. I'm crazy about Rabindranath Tagore ji. Because award तो सभी जीत जाते हैं. Award जी. वापस करना it shows not what you do for living, but who Yeah. you are inside. That's true. I feel that whole thing in his contribution to using arts of a different space. Yeah. It's been very inspirational. For movie making, my very big inspiration comes from Neeraj Kevan, Meera Nair, Deepa Mehta, Yeah. Doug Roland. These are the people who pushed me to do this. And Sharmeen Obaid. These are the people who really pushed me that I should make movies. And in restaurant world, I'm very inspired by. So the problem is कि मैं इतने worlds हैं मेरे इकट्ठे किए हुए हैं. And So many words. restaurant world, I think one person who's really been my pillar rock is Chef Sanjeev Kapoor. जी. Besides that, in the global world, Chindan Pandya, I'm very inspired by Vineet Bhatia, Atul Kochhar. Garima Roda is one of my heroes in my life. Yeah. I feel that Gordon Ramsay, because I worked with him a lot, and I'm not that guy who just wants to name a white chef क्योंकि अच्छा लगता है. जी. मैं होम हाउसवाइफ्स का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ आफ्टर पेंडेमिक, सीइंग हाउ वेल दे कुक.
Yeah, And they, of course, we know the cook, but how they are able to put it through on the cameras. it's true. Very amazed. I'm very amazed. Yeah, that's very impressive. But such a great list of some great people, yeah. I mean, they all inspire you. It's No, a अभी very तुमने long बुक्स का and नहीं big सुना. list. अभी तो मेरी किताबों की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? तो वो अच्छा, वो भी है, right? हाँ. But it's okay because I'm also understanding of the position and I'm also understanding the influence. But I Yeah, also understand that I have to be constantly finding new ways yeah, to express myself, to give voice to the people who will never have it if we don't rise for them. true. That is true. But Vikas, thank you so much. It was Thank such you so a much. It good was chat. really, really a pleasure. Take care. You too. And I really hope कि आप इसी तरह की और हार्ट वार्मिंग कहानियां हमारे लिए लेके आते रहो, बिकॉज जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, we just hope कि आप भी हमें इस तरह से इंस्पायर करते रहो आगे. Thank you. Thank Bye. you so much. Bye. Take care.